ओर से, अपनी तरफ से, एससीईआरटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आज के सेशन में आपको आमंत्रित करता हूं। वेलकम मैम, वेलकम, प्लीज कंटिन्यू। Thank you so much, Dr. Ashwini. In fact, I'm very thankful to you for giving me an opportunity to interact with 40 principals, who are with us right now. Thank you so much to all the principals for participating. As you know, the topic which is given to me looks a very common topic. It's like we say that it's going to be talking about developing a learning culture. अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं हिंदी में अगर नहीं बोलूं, अंग्रेजी में बोलूं तो चल जाएगा आप लोगों के साथ? Bilingual, ma'am. I think bilingual is better. Okay, I'll try to do that definitely. और सबसे पहले तो जब हम एक लर्निंग कल्चर की बात करते हैं, I believe that my session should be more interactive. You all are very learned principals who are with us. You have your own experiences. And you also know what the pedagogical requirements are. And in our country, once you become a principal, though we have a option of going into the schools and teaching also, we find that most of the principals do not find time to go to the classes again. Is that correct? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? क्योंकि हमें कुछ तो क्लासेस लेते हैं हम लोग हर महीने। आप में से कितने लोग क्लास लेते हैं? मैम रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि कितने लोग लेते हैं। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, क्योंकि अगर लर्निंग कल्चर की बात करते हैं तो ऑब्जर्विंग द क्लास नहीं, रेगुलर क्लासेस, दैट नॉट फॉर जस्ट ऑब्जर्विंग, बट वी आर टेकिंग टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर टेकिंग? यस मैम, यस मैम, वी आर टेकिंग। ऑल ऑफ यू आर टेकिंग? मैम, मैं ब्रीफ में बीच में एक बार बोलना चाहूँ, अनुमति देते हो मेरे को? हाँ, बीच में 1 मिनट बोल लूं, अनुमति दे तो? जरूर जरूर। हम 80 के दशक में 2-in-1 आया था पहले हमारे देश में, और जिन प्रिंसिपल साहिबान जो आप सामने बैठे हैं, ये ऑल इन वन है। ये क्लास भी लेते हैं, ये पीएन का काम भी खुद करते हैं, ये सफाई भी अपने विद्यालय में जब कोई नहीं आता, पीएन तो अपना मेज का कपड़ा भी लगाते हैं, क्लास तो लेते रहते हैं मैडम सारे। ये ऑल इन वन है। ये मैं ये कहना चाहूंगा आपको। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है जब हम एक डेवलपिंग लर्निंग कल्चर की बात करते हैं, और अगर प्रिंसिपल उनके साथ जुड़े हैं जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला तो जो केंद्र में हम रखते हैं, उसको रखते हैं हम एक विद्यार्थी जो स्कूल में आता है पढ़ने के लिए, आपसे वो कितना रिलेट कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा एक जो है वो बेसिक क्राइटेरिया होता है जब हम एक लर्निंग कल्चर की बात करते हैं। इफ यू डोंट माइंड, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई मेड जस्ट 2-3 स्लाइड्स ताकि हमारा डिस्कशन उसके आसपास रहे, और हम उससे फिर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। Can you see this? Are you able to see the presentation? Yes, ma'am, it's visible. Okay. तो जब हम learning culture की बात करते हैं, the very important point is that we must be in sync with all the stakeholders of the learning system. Now that entire stakeholder means all the stakeholders. That includes the non-teaching staff, that includes the community, that includes all kinds of stakeholders will be there. And क्योंकि आप पूरे हरियाणा से हैं और आपके सारे districts जो हैं वो अलग-अलग learning levels पे भी है, so it's more interesting to know that what are the reasons that some of the districts are doing very well, some are not able to do very well. और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में आपके पास सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन फिर भी वो लर्निंग उस लेवल की नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल कल्चर है वो भी कहीं पे आता है कि like your school is located in a place where probably the children who are coming are of the different socio-economic backgrounds. और जब बच्चे डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो कुछ बायसेस तो हम एज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेकर चलते हैं कि शायद हमें कुछ ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी आर लुकिंग एट द एंटायर
learning culture, and that is why the first point is that we are talking about the agreed collective values. This is important. Most often हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्कूल तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहां पे डिमांड नहीं हो रही है लर्निंग के लिए. So I think somewhere there is also a lack of demand and supply cycle, where we feel that due to which there is a lot of limitation in terms of giving the best in spite of putting in the best. So the second point, which talks about the assumptions and beliefs, which you all, one is that how we are prepared, how we are looking at. The other is that, how are you imbibing the society's culture also. बहुत एक important चीज है कि अगर हम उसको relatable करते हैं, that is why you're having this pedagogical workshop, that we have a uniform syllabus, as we all know, but you all are trained yourselves, and into our teacher preparation, the first of the very important thing is we look into low cost, teaching learning aids. Are we using that? Because एक जो हम लोग एक learning culture करते हैं, it's a very broad perspective. It is not limited only in terms of creating any kind of the resource center which is there. But if you're creating a resource center, how many students are really coming and using those resource centers? Is it limited only to the students, or is it open to the community? Many other things also we can go and extend, which are going to be a part of it. So one is that try to involve each and every stakeholder. I think in the past 3 decades, we have seen since the 1990s, there has been a lot of expansion of schools, and also there have been numerous schemes which have been there, and especially in the context of Haryana, we find that there's a lot of focus on the girl child also, the participation of girl child. Then if I'm looking at these issues, because what is happening that when we are looking at the learning culture, the very important point is that हम लोग जो हमारी पॉलिसीज हैं हम उनको कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं ग्राउंड. और अभी आपका NEP 2020 जो है वो भी हम लोग अभी in the coming 2 years we all are seeing that it's going to be executed, implemented into all our schools. How are we going to look at those changes also which are going to happen into the system? So the most of the relationships which are there, either with the stakeholders or with the curriculum or with the way you are doing teaching and learning, what kind of resources are available, do you have any kind of organizational structures which are very, very in sync? The last point, which is very critical, is talking about the the most important component is the infrastructure. So but I think infrastructure doesn't fit more into the culture in my view, because infrastructure may be available or may not be available, but still it doesn't stop learning. Do you all agree with this statement? थोड़ा सा मैम श्योर वार्तालाप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है आपके स्कूल में अभी जिसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अलग अलग स्कूल से को हेड करते हैं, you all are principals yourself. What is your experience, or what do you think are your limitations due to which you feel that the learning culture is still not up to the mark? Can you please share your experience? मैम शॉर्टेज ऑफ टीचिंग स्टाफ, Okay. ये बहुत बड़ी हर्डल है जी. क्योंकि जितना स्टाफ रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, तो जब हम दूसरे स्टाफ को उसकी ड्यूटी असाइन करते हैं तो उसका खुद का काम भी सफर करता है. Okay. So you're talking lack of human resources, जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि श्योर मैम. teaching staff, non-teaching staff, every kind of staff, we find that there is a limitation in that. Anybody else would like to add, ताकि हम इस पे थोड़ी चर्चा कर पाए? I think एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है हम लोगों को जब हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आते हैं, कि अलग अलग जिले से आप हैं, आपके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनको अगर साझा करेंगे यहाँ पे तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. Yes, anybody else would like to? Ma'am, myself Neeta. Yes. Ma'am, all things are going well except teachers. अच्छा, तो टीचर्स में आपको क्या लगता है कि?
they are very short. We have 35 posts, but in my school only 8 teachers are working. Okay. पर 8 में आप लोग स्कूल चला पाते हैं? मैम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं। बस वो 8 जो है वो 80 के बराबर है। तो अगर आप बोल रहे हैं 8 80 के बराबर है, तब तो बस मानूंगी कि हमें प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं तो वो एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं ना, कभी ना कभी तो एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं वो भी। Okay. Anybody else? Ma'am, same problem in all the ROE schools. Okay. Fine. तो lack of human resources आप बोल रहे हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्योंकि जो कि हम सभी एक एजुकेशन फ्रेटर्निटी के, हम तो ये मानते हैं कि अगर जितने भी चैलेंजेस आते हैं, वी आर एबल टू ओवरकम इट, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द इनोवेशन अवार्ड्स आल्सो। मोस्ट ऑफ यू गेट द स्टेट अवार्ड्स बिकॉज जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट पे हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई योर बेस्ट प्रैक्टिसेस आर द वंस व्हिच वी ऑल लुक फॉर। डू यू एग्री? क्या मैम, वी एग्री। तभी तो है ना कि हमारे पास स्टाफ शॉर्टेज है, लेकिन हम क्वालिटी को सफर नहीं करने दे रहे हैं, तभी स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं जी। तो हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स एंट्रेंस देते हैं कि हमें एडमिशन लेना है। स्टाफ शॉर्टेज है, पेरेंट्स को पता है वहाँ टीचर्स नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी से फिर भी सेटिस्फाइड है। ओके, तो दैट मींस आपका तो फिर लर्निंग कल्चर बहुत स्ट्रांग है, इफ यू आर एबल टू वर्क इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज। हाउ कैन वी ओवरकम इट? बिकॉज़ टीजीटी, जैसे मैम टीजीटी हमारे पास एक भी नहीं है। 6 से 8 की क्लासेस हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी 2018 में। उससे पहले हम 9 से 12 रन कर रहे थे। अब 6 से 8 इंट्रोड्यूस हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे को 4 साल में एक भी टीचर नहीं मिला। उल्टा 9 से 12 में भी हमारे पास साइंस और मैथ के टीचर नहीं है। अब 6 से लेके 12 तक बिना साइंस मैथ्स के टीचर को हम क्वालिटी दें, हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमने स्टेट टॉपर दिया, 12th में भी दिया है, 10th में भी दिया स्टेट टॉपर। लेकिन मैं एक छोटा सा और एक पॉइंट यहाँ लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट पिछले 2 सालों में हम लोगों ने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे आप सब भी, हम लोग सब बड़े एडवर्स होते थे पहले कि नहीं, वी विल नॉट बी डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज, वी विल नॉट हैव ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी ऑल आर फोकसिंग ओनली ऑन द ऑनलाइन लर्निंग, and in many ways online learning has both aspects. I'm not saying it's only positive or negative, because it always have a any kind of teaching and learning you take place, you will have the plus and minuses in both the situations. So but if we are looking at the lack of human resources, and since we know that we have a platform where we can connect with more number of people, and we can reach to so many number of people within the same span of sharing the resources, how effective is it? मैम जहाँ तक स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की बात है, स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। अगर हम प्री प्रिपेयर्ड मटेरियल शेयर करते हैं तो वो इंडिविजुअल नीड्स को कैटर नहीं करता, वो एक यूनिफॉर्म मोनोटोनस रहता है। और फेस टू फेस अगर हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, चाहे गूगल मीट से है, चाहे किसी भी तरह से है, उसमें बच्चों की अटेंटिवनेस की प्रॉब्लम रहती है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, घर पे मोबाइल नहीं होता, पेरेंट्स के पास एक फैमिली में एक मोबाइल है, वो पेरेंट्स के साथ वर्क प्लेस पे चला गया, और इस तरह के बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं। और बच्चे को हम ऑनलाइन असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे ऑनलाइन असाइनमेंट के नाम पे पेरेंट्स से फोन लेते हैं और वो गेम खेलते हैं या फिर अदरवाइज साइट्स को सर्च करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। रूरल एरिया में तो स्पेशली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की। हाँ, रूरल एरियाज में खैर दूसरा ये भी होता है, कनेक्टिविटी इशू भी है, और कनेक्टिविटी इशू नहीं है तो लैक ऑफ resources भी है. How do you think that we can overcome it? And this is the case even with the adult learning. We find that even in the adult learning, people may not be, maybe they're logged in, but we are not attentive. Do you agree? It's not only with the students. Yes or no? I think we should be more, open about this. So you mean to say that if you are using the online resources, hello, it will not? Yes. हाँ जी, जी, हाँ जी मैम, मैं धर्मपाल सिंह बोल रहा हूँ जी। जी धर्मपाल जी बताइए। हाँ जी सर, मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेज के ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ।
क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें बच्चों से हम सीधे इंटरेक्शन होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बच्चे शेयर कर सकते हैं जी। और ऑनलाइन के अंदर क्या है, उनको एक तरह से परमिट मिल जाता है, लाइसेंस कहेंगे हम उसको, कि वो मोबाइल का किस प्रकार से यूज करते हैं, और ना ही हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पाता। तो लेकिन क्या करें, विकट परिस्थितियों में वो भी बेटर है, जैसे कोरोना काल के अंदर हुआ था, तो वो भी बेटर है। जो नहीं से तो कुछ जो चीज है वो अच्छी है जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की भी बात करते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर माँ बाप भी काम कर रहे हैं तो कोई भी घर में बड़ा है व्यक्ति, तो वो भी देख सकता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। I'm just stating, I'm not saying this is right and wrong, but these are the ways. That is why we are talking about the stakeholders at an extensive level. तो बहुत सी बार एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर हम एक कम्युनिटी में एक जगह अगर हम ट्रांसमिशन लगा के और वहाँ पे कुछ एसएमसी मेंबर्स के साथ बच्चों को बिठाएं जहाँ वो पढ़ रहे हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमें यहाँ नहीं मिल रहे हैं वो ऑनलाइन के जरिए वहाँ मिल जाते हैं। खैर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज अ राइट प्रोसेस, जैसे आपने बोला धर्मपाल जी की ये कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है, अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं तो उससे हमारा पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो therefore when we are looking at the stakeholders, I think the very important point is that हम लोग stakeholders में जितने एक्सपेंशन करके और जितने लोगों को इंक्लूड कर पाए उस पे वो एक जरिया है जिसके थ्रू हम एक लर्निंग कल्चर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि the first premise why I talked about this question is that, you know, if you do not have the human resources in your schools, you're so hard pressed. And when we are talking about a learning culture, that means that we should have at least the active participation of all the stakeholders. You agree? Anybody else like to put your points forward? प्लीज इसको थोड़ा इंटरैक्टिव रखें। और भी बहुत सारे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स, एंड यू हैव योर ओन चैलेंजेस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग कल्चर। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर दैट because at least two of the very important points have come up. One is the lack of human resources, and the other is that the online sharing of resources needs to be more, with a lot of caution. That is what Dharampal ji is saying. Anybody else? I hope that you all are with us. Okay, so I think you have agreed. लेकिन अभी तो खैर morning session है, morning में तो I think we should be more participative. It's not afternoon session. So I look forward that you should be having more interactions with them. The one of the very important point when we are looking at the learning cultures begins with the social climate actually. And social climate में आप जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास टीचर्स की भी कमी है, लेकिन फिर भी जितने भी टीचर्स हैं, जैसे किसी ने बताया मुझे कि हम लोग 8-80 के बराबर है, तो अगर आप वो कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्रेडिटेबल है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो ओनरशिप है आपकी कि आप स्टूडेंट्स को सेंटर स्टेज पे रख रहे हैं और उन स्टूडेंट की जो लर्निंग एनवायरनमेंट है आप उसको 100% उसमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं। The second very important point is in the learning culture when we are looking at that, how do you put all the children with the different learning levels together? आप कहीं भी ये डिफरेंशिएट नहीं करें कि कौन सा बच्चा किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ आ रहा है या किस इंटेलेक्चुअल लेवल्स के साथ आ रहा है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ। ऑल्सो because that's a part of achieving the intellectual climate into the school, where we are looking at achieving the quality parameters at all the levels. Now, how do you really look into the quality parameter? That is, one is that you're very constructively engaging with the students and the curriculum.
प्रोसेसेस हम लोगों के पास, सबके पास है। हम लोग बहुत अच्छा लेसन प्लान बना के जाते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि बच्चों को हम उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं इंगेज कर पाते। ऑल्सो एवरी एज ग्रुप विल हैव देयर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। तो आप जो प्राइमरी स्कूल में देखते हैं, मिडिल स्कूल में देखते हैं और हायर स्कूल में देखते हैं, तो आप उसमें सेम एफर्ट में आप एक अलग आउटपुट आपका होता है और स्टूडेंट्स का होता है, इट इज नॉट द सेम। सो यू मे बी गिविंग द 100% ऑफ योर attention, 100% of it, but it happens at times that probably you're not getting the results which you are focusing on. Also, somewhere we need to look into that, that each and every classroom is very well supported, not to be seen with the different levels. The other is the rules and the policies, which is one of the very important points, and this applies to each and every stakeholder, let me tell you. ऐसा नहीं होता है कि रूल अगर है तो वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, वो टीचर्स के लिए भी उतना ही है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी उतना ही है। और हम कम्युनिटी और पेरेंट्स को जिस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं थ्रू द SMCs, थ्रू द पेरेंट टीचर एसोसिएशंस, आप उन प्लेटफॉर्म्स को कितना यूज करते हैं डेवलपिंग द लर्निंग कल्चर। I think most of you are the awardees yourselves, and you must be having some very good examples with you yourself, which I would like you all to share here. मेरे ख्याल से आप इंटरेक्शन में बिलीव नहीं करते हैं। I think I am seeing 40 participants here. We have 31 participants here right now. So I can hear at least 5-6 voices. Yes, anybody would like to share that how you have created the good academic or this academic standard in your school? What have been your inputs? आप क्या करते हैं बच्चों को academically involved करने के लिए? Can I call out the names? Then I have to check the names and then I will start taking the names. I'll be very happy to listen to your voices, please. You have decided not to speak in the morning. Anybody? आपने किस तरीके से अपने schools के learning levels को high किया? Because at least I know from NIEPA we have 2 of the very important programs and you all have participated in it. One is the leadership program and the other one is the school standards and evaluation. Most of you are following that in your schools or not? Yes, Sunita ji, आप बोलना चाहते हैं? You can raise your hands and please. Yeah. Yes, ma'am. As we have discussed already कि हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, तो हमें तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। इवन कोई लाइब्रेरियन है, ये क्लर्क है, उनको भी हमें मोटिवेट करना पड़ता है कि एटलीस्ट 1 और 2 क्लासेस आपको लेनी है। और जहाँ किसी को प्रॉब्लम आती है तो उनको बैठ के डिस्कस किया जाता है। और 6 to 8 में हमारे पास एक भी टीचर नहीं है सभी ROE स्कूल्स में। तो ये टीचर्स जो प्रिंसिपल्स हैं, ये अपने टीचर्स को मोटिवेट करके, अपने स्टाफ मेंबर्स को मोटिवेट करके ही स्कूल चला पा रहे हैं। तो ये टीम वर्क तो है ही है। साथ साथ पेरेंट्स को भी इस चीज का पता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को ये उम्मीद रहती है या हमसे ये कि यहाँ पर तो वो किसी ना किसी तरह से पढ़ाई हो ही जाएगी, इसीलिए वो इतनी दूर अपने बच्चों को भेजते हैं। पूरे पूरे ब्लॉक से बच्चे आते हैं हम लोगों के पास, इतनी टीचर की डेफिशिएंसी होने के बाद भी। और हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी ज्यादातर लिंक रोड पे हैं, कोई मेन रोड पे नहीं है, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो उनको अलग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स की कोऑपरेशन भी रहती है, कुछ पूरे स्टाफ की कोऑपरेशन रहती है, टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग की भी, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। So how do you manage the classes? How many of the schools are actually applying and implementing the multi-grade teaching? Because that's also one of the methods which we all have been using in keeping our learning culture very intact. मैम, इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग इसमें
यूट्यूब वीडियोस की भी हेल्प लेते हैं टीचर्स, जहां पर जिनको दिक्कत आ रही है। जैसे अब हमारे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के मोस्टली टीचर हैं, मेन सब्जेक्ट के टीचर हैं ही नहीं, तो उनको वो पहले लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं, पहले वो बुक्स को रीड करते हैं, जहां दिक्कत आती है कुछ वीडियोस देखकर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह के हमें करना पड़ता है। जहां दिक्कत आती है हम लोग आपस में बैठकर भी स्टाफ मेंबर्स उसको डिस्कस करके तभी बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। Okay, so in this process, you know, when I'm looking at, because you all have your school development plans also, you have annual plans which is already there, and we already chalk out the priority areas into our school development plans with the mission and the, you know, vision and the mission of your school. How often you are able to, you know, integrate the staff and the students also when you have any kind of shortage? How इसमें मैम effectively? जी, इसमें हमारे साथ वो स्टूडेंट्स भी जुड़ते हैं जो स्कूल को छोड़ चुके हैं। वो भी एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए पढ़ाने के लिए आना चाहते हैं अगर वो फ्री हैं। लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हो पाता है क्योंकि उन्होंने आगे भी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। उन्हें पता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही स्टाफ की शॉर्टेज है और इसलिए उनका भी रहता है। सीनियर स्टूडेंट भी थोड़ा जूनियर क्लासेस को एक आध पीरियड ले सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हैं। बट है सब कुछ ये इसी उम्मीद पे चल रहे हैं कि मे बी इस सेशन में हमें टीचर मिलेंगे, मे बी इस सेशन में, इसीलिए स्कूल अब तक चल रहा है। that I know. See, but that is a reality. In fact, you know, जैसे हम देखते हैं कि ये तो हमारी reality, हमें इसी के साथ चलना है। हम we don't have any option. This is a ideally we should have it because we have 30 sanctioned seats. We should have 30 staff. Very, very simple logic to it. But the reality is that we do not have. And this is a global phenomenon, let me tell you. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही कमी है. When we are looking at the global reports, we find that you will find that you have very less number of teachers, you know, when you're looking at the higher education levels, for instance, because you need subject experts there, which is more difficult to find than, you know, you're looking at the primary level. And this is a global phenomenon when we are looking at the reports which are talking about the teacher shortage, which are talking about the, and now of course in the last 2 years, we are now getting the global reports which are saying that there is a lot of learning deficiency which has happened due to the pandemic, because obviously the whole world, it's not that, you know, we are talking about only India, the whole world is grappling with the same issue. But that has not stopped any of the child from learning. You know, we are doing our best, and I think a very valid point, you know, what Dharampalji is saying is that definitely the face-to-face cannot be replaced with the online mode, especially with the children who are in the very young stage, because they need most of the social interactions which they need to learn in. There needs to be a culture of reading. And now what is happening is that we are not finding children with the books. We are not finding children, you know, reading. They're using the laptops. Anyhow, we will talk about the other issues, which is not into my domain right now, because I'm going to focus more in terms of that. How do you create the learning cultures in spite of the change in the situation? And therefore, we are looking more into the innovation structures. And I think the interaction of the school with the community is very critical in this particular context. We are seeing in some of the states, जो टीचर्स हैं वो उन बच्चों के घरों में जाते हैं. अंदर तो आप जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, बट एटलीस्ट दे मेक एन एफर्ट कि आप हफ्ते में एक बार उस गांव का या आसपास जहां बच्चे रहते हैं वहां पे जाके आप उनसे एक इंटरेक्शन करें. So probably that also influences and encourages the students to really be a part of it. So how innovative you are, how much curiosity you are able to develop into the kids for learning. तो इसीलिए मैंने जो पहली बात बोली थी कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, उन स्टेक होल्डर्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, that is where your role is very critical. आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे एडिशनल टास्क होते हैं, because you are the administrative as well as academic head. The principal is doing the, you know, multitasking at the different points of time. So therefore your you know platforms of conveying the different messages, how do you really create the interpersonal relationship, how you work in the team, how do you create
the teacher attitudes, you know, positive आप teacher उसका वो attitudes. भेज देना, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड का। Can you please उससे mute मैं your प्रवीण को mic? बैठूंगे, प्रमोद सर उनसे Dr. मिलते Poonam? बार, या I नीरज think मैडम से somebody's मिलते, mic is on. क्योंकि इसमें कैमरा ऑन करना कंपल्सरी होता है हमारा। Can you please mute yourself, Dr. Poonam, I think? Yeah. Okay. So how are you really motivating the teacher? I think the leader's job is to motivate the team. And that is something which is, you know, and as we all know that everything is interrelated, all the skills have to be weaved in together. And we are looking at the learning culture which is also, how do you really create that team? And creating a team, again, as I said, is not limited to only one stakeholder. So one is you can have a sharing with your group, that is all the principals will have one kind of a platform. You can also be a part of the teachers groups also, because now we have the WhatsApp groups, as we all know that everything is communicated very fast through the WhatsApp. Now WhatsApp as a part of the social media has become more integral. Excuse me, Rajni, please, mic on है, please. I think the organizer can switch off the mic. I think you can. Okay. So when we are looking at the second very important component is that, you know, when we are looking at the learning culture, according to the rules and policies, we are looking at RT, which is a mandate that every child has to be in the school. Now, when every child has to be in the school, how are you really motivating that child at all the levels? So one is not only looking at the child with the academic input, but also how confidence building is also taking place. And that can happen only when you are involving all the students together. And there is a kind of sharing that's happening through the different levels. So we have the assembly. In all the schools, we have the assembly. But even in assembly, how are you integrating each and every grade student into these kinds of also when we are looking at the social climate, the very important point is that you need to give a lot of confidence to the kids when they are doing some work. So you can probably display them. You can also be you know, a part of greeting them in the morning, because that also helps in defining the school culture. How accessible the teachers are to students, that is very important. There should not be a gap where the child is not very comfortable or not very confident coming to you and talking about their points. नवदीप की ड्यूटी Another नवदीप और तो very फ्री हो जाएंगी important नवदीप की point ड्यूटी is तो लगेगी related नहीं to you know, creating the a very safe and comfortable environment, learning environment. That means that you must बना तो देर का educate about the students. This is very important. जो शुरू में मैंने बात कही, और अगर वो different backgrounds के भी है तब भी उससे कोई problem नहीं होता है, because the biases are mostly, you know, with our mind, I feel, especially in the अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करते हैं तो हर बच्चा एक क्लीन स्लेट की तरह आपके पास आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके की वैल्यूज दे रहे हैं, that makes it very important. Another very important point is that, how do you give Excuse me, Rajni ma'am, please. that's a part Disturbance of, बहुत हो रही है. I think if ऐसे नहीं बुलाती मैं पेट भरूं sorry, I will try to continue in spite of the disturbance. I hope that you are with us in that. Okay. You also have to be, you know, as the principals, आपको एक goal setting करते हैं कि हम लोग हर साल इस level से इस level तक पहुंचेंगे. वो बहुत important है, not only for your school, but even for your, because, you know, we always feel that we need to maintain a diary, which we have very integral, which is a very integral part of the teaching profession. How many of us really maintain the diary is always questionable, because we do not find time still, you know, even to write those 3-liners, you know, what we have learned into our systems, we are not able to do that. Also, you know,
there needs to be a very strong interactive platforms with all the stakeholders and especially the school children. And also, how are you getting connected with the students? This is very, very important. Also, the very other important learning culture which can be developed is that, every classroom is reflecting their achievements, and every other classroom students are also coming and seeing that. So how do you really display? And the second very important point is what happens most often कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चे गाना अच्छा गा रहे हैं, ये बच्चे खेलते अच्छा है, ये बच्चे जो है वो इस तरह लिखने वाले काम ज्यादा अच्छे करते हैं, तो हम लोग उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके ज्यादातर हम उन्हीं को ही काम देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये एक रिवर्सल भी करने की जरूरत है। This gives a lot of confidence to the kids that we can also do it. But usually what we see into cultures, into the schools, is that we identify children that they डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक कौन है? रजनी मैडम, that we are not getting biased or not getting stuck only with those. Every new batch will give that possibility, and I think there needs to be a roster which can be prepared in your own schools where you are involving each and every child into the different kind of activity, because that helps in children in developing that belongingness to that particular school. Very important that everyone is a part of the system. This is what I've learned. Secondly, when we are talking about the behavior policies or the rules and policies, then we are saying that discipline is the core. Now that disciplinary actions will not be limited only to the students but also to the teachers. बताओ सर देगा क्या सारा Also, because at times it happens that you're also not able to do justice due to your either personal or professional reason. You will be give more importance to your professional development at one point of time. There could be many number of ways when we are looking at it. So very important is that we have a transparent system, because that will help in creating that faith into the system for the kids, and also for the parents. भी जैसे किसी ने बताया पेरेंट्स स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, चाहे आप लोगों के सामने बात टीचर्स की कहीं ना कहीं आपका वो एक एफर्ट है जो रिकॉग्नाइज हो, सो कीप दैट एफर्ट रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल. The other very important point is that you also have the similar policies for your staff as well. नहीं कहोगे ना, मुझे पता है. Very often what happens. रजनी मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए इनको, हम तो तैयार समझ नहीं आ रहा. जब तक मैं नहीं पूछूंगी तो फिर Can you please switch off your mic, Dr. Poonam? समझ रहे हो आप कि आपने पूछा नहीं. I think तो करना है, she's not getting the. रजनी मैम प्लीज म्यूट कर लो डॉक्टर पूनम को. ठीक है, हाँ ठीक है मैडम, कर दोगे कॉन्ट्री? ठीक है. क्या फिर समोसे ही मंगवाए क्या? And the policies have to be the same for all stakeholders. So never to make that distinction or give that image that you are a teacher so you can do this, or you are a principal, you can do this. Somewhere we need to create that kind of an objectivity in accepting the rules and policies. The other very important point is that when we are talking about again the assembly, जैसा मैंने कहा कि आप हर बच्चे को अगर एक मौका दें, क्योंकि हमारे पास कम से कम 200 दिन होते हैं, आप उन 200 दिन में अगर आप हर दिन एक नए बच्चे को एक चांस देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज. वो लिमिटेशन हमें ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब किसी को ट्रेन कर देते हैं हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा ये बच्चा ये कर लेगा, एंड दैट्स इन ऑल द सिस्टम्स आई एम टॉकिंग अबाउट एट इवन व्हेन यू आर लुकिंग एट योर ओन स्टाफ. आप कुछ टीचर्स जो है वो आपको लगता है कि इस तरीके का काम ज्यादा अच्छा करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ लोगों को, हम ये काम इन्हीं लोगों को देंगे. ट्राई टू ब्रेक दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, especially in the learning organizations, that everybody gets a chance to come to the center stage and enjoy the learning part, because when you are responsible for something, you will learn, you will perform. So it may not be a very good performance, it's fine, but at least you are getting a chance to reach to that level.
Also, when we are talking about the traditions and routines into the broader perspective, we must also be making all the stakeholders a part of your school development. बहुत सी बार होते हैं हम मैनेजमेंट कमिटीज के साथ अपना बैठ जाते हैं, आइडेंटिफाइड टीचर्स के साथ बैठ जाते हैं, पर अगर हम, क्योंकि आइडियली तो वी शुड हैव द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, बट वेरी ऑफन वी डू नॉट हैव वन दैट टाइम, बिकॉज यूजुअली आपके प्लान्स बनते ही हैं जब एकदम लास्ट मिनट होता है. तो एक जो चीज प्रिंसिपल्स करते हैं और कर सकते हैं is to give that probably half an hour time every week or 1 hour in a month where you can integrate all the stakeholders together. तो जैसे आप पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं तो उसमें आप एक दो एजेंडा आइटम्स ऐसे रख सकते हैं जिससे आप अपना लर्निंग कल्चर को और एनहांस कर सकते हैं. सो दिस इज a way of creating accountability and also creating the processes which are integral to the system. We are not showcasing it to others, it's for our own development. This is how you can look into it. And similarly, when you're having any kind of events in your schools, वो आपके इवेंट्स तभी सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं जब सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं. तो कहीं ना कहीं आपका वो कोलैबोरेशन, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, अगर वो एक सोशली रिच है, तो यू कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ activities which can be there. And especially in Haryana, I know that you have many you have a lot of focus on the sport activities. You have many of the children and you have the state performers. So how can you take those role models also as a part of your system in enhancing that structures? That is one of the ways, especially if I'm looking at it in the context of the last I think, because we have just another 10 minutes, the last very important point is that you must give and create a platform where the students and the staff, they are able to speak with you. तो बहुत सी बार होता है कि हम लोग एक वो जो गैप होता है एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में या एक एम्प्लॉय और प्रिंसिपल के बीच में, कहीं ना कहीं वो ब्रेक जरूर होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा दिन आप निकाल लें जिसमें वो बिना किसी अपॉइंटमेंट या फॉर्मेलिटीज में आपके पास आ पाए. तो कोई ऐसा समय हो जिसमें बच्चे जो है वो, यू कैन ऑल सी they get a lot of enthusiasm once they are coming to the principal's room. It's a very big achievement, let me tell you. We also, I remember that when I was just a child or when you were a child, I'm sure that this is an aura which the principal office has and you want to go and see what is there. So create those atmospheres where you are very, very comfortably linked with the students, because students are the center stage. Because you all have student councils, लेकिन student council में भी होता है कि एक representative आके आपसे मिल रहा है. अगर आप पूरे ग्रुप के साथ मिले तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस मिल रही है. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बच्चे बिना किसी डर के आपसे शेयर कर पाए कि मुझे क्या एक्सपीरियंस है मेरा अगर मैं इस कोर्स को कर रहा हूँ, या फिर जैसे बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में नहीं अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि टीचर्स की ही प्रॉब्लम है, बहुत सी बार स्टूडेंट्स भी बहुत उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. सो इट हैज टू बी अ टू-वे प्रोसेस. आई एम नॉट सेइंग कि एक जगह पे आप आके रुक जाए, बिकॉज दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग दैट वाइब्रेंसी इन योर स्कूल वेयर एवरीबडी इज टुगेदर. You don't have that biases because of your hierarchical structures or the rules which you all have played. And it helps you in correcting many of the things at the right time. तो आपको साल के अंत तक नहीं वेट करना है कि मेरा क्या रिजल्ट आए. आप उसको कहीं ना कहीं हर 3 महीने में, 2 महीने में एक रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से एरियाज है जिसमें आपको ज्यादा फोकस की जरूरत है. The other very important stakeholder in my view are the parents. आप पेरेंट्स के साथ कितना कॉन्फिडेंटली आप एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म रखते हैं. ज्यादातर ये होता है कि हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव ज्यादा हो जाते हैं. पेरेंट्स को हम बोलेंगे आप ये करिए, या पेरेंट्स हमें मतलब स्कूल्स को बोलते हैं कि आप ये करिए. कहीं ना कहीं क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है और ये हमें नहीं पता कि हर स्कूल में हर सेमेस्टर में हम देखते हैं कि एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट
रेज हो जाती है. तो फॉर इंस्टेंस इफ वन ऑफ द टीचर इज रिटायर्ड इन बिटवीन द सेशन, और आप उस टीचर के रिटायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज द इनिशियल वैक्यूम टेक्स सम टाइम, so that's the biggest जोड़. आप उसको किस तरीके से फिल करते हैं, या फिर जब कोई टीचर रिटायर होने वाला होता है, जो हमारी पॉलिसीज तो यही बोलती हैं कि हम उसके 1 साल पहले एक पैरेलल तैयार करते हैं ताकि वो वैक्यूम क्रिएट करे. पर चूंकि यहाँ तो हम बात करें कि यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वैक्यूम तो और ज्यादा हो जाता है. तो हाउ डू यू प्रिपेयर योर एग्जिस्टिंग टीचर्स इन दैट केस कि व्हेन ही और शी विल रिटायर, तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आप पहले से तय कर सकते. तो जो मैं मल्टीग्रेड टीचिंग की बात कर रही थी, वो इसीलिए कर रही थी कि देयर आर सो मेनी ways in which we are able to overcome these hurdles, and that's why the innovations, that's why we are saying that thinking out of the box things will be very, very critical. And you all would be doing most of the things on your own, I'm very sure about it. Since the involvement of parents is very critical in your performance, your means the performance of the school, I'm saying, you have to create the ways in which you are interacting more with the parents at the different points of time. That could be through social ways also. At times it is not necessary कि आप एक formal way करें. जहाँ पे भी आपका situation है, वहाँ पे अगर आप एक direct interaction रखते हैं parents के साथ, somewhere that confidence building and that learning culture gets much more enhanced. दूसरी चीज कि हम लोग ज्यादातर पेरेंट्स टीचर मीटिंग को भी हम लोग बहुत फोकस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम में ही रखते हैं कि हमें इतने महीने में ही रखना है. आई थिंक कभी कभी आप वो पैटर्न भी ब्रेक कर सकते हैं, एंड इट शुड नॉट बी द रेगुलर विद ऑल द बैचेस एज वी फील. तो एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू कैन डू इट. तो अगर आपको लग रहा है कि इस समय हमारा परफॉर्मेंस लेवल्स जो है बहुत अच्छी नहीं है, समवेयर वी आर हैविंग we always feel that the learning is always like a bell graph, so it goes up, it comes down, there's no stagnation in it. So somewhere we need to look into those kind of things also. As far as the way we are talking to the children is also very important. How much honor you are giving to the children, to their parents, to your non-teaching staff. It plays a very important role in strengthening your learning cultures into the schools. Very, very critical. If you are using the home language, मतलब हमारा medium of instruction एक बहुत बड़ा एक जरिया है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बनते हैं. आप उसको किस तरीके से बहुत strongly use करते हैं, और with lot of respect. I think respect is the key, when we are looking at the leadership values. So you need to value and respect, the medium of instruction from where the child is coming. Also, if they are, physically challenged, how you are integrating those children into the learning environment is also very, very important, and especially in the initial classes. So one has to create the avenues where you are listening to each other, where you are sharing your resources, and also being very polite and considerate to each other. I think these are the things which, are the unsaid things, when we are looking at the school culture. So I feel that, when we are looking at the entire ways in which we are looking at the norms and relationships and behaviors of the different stakeholders into the schools, I think that makes the system much more convincing for the students when they're coming. I think इसके बाद आप कोई कुछ share करना चाहेगा based on your school experiences? I'll really look forward to hear from you now. I hope you all are there. Mukesh Kumar, I think you have raised your hand. Do you want to ask something, or your hand is raised for a very long time? Okay, you don't want to speak. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे प्रिंसिपल्स बैठे हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा है हमारे से? Yes.
Okay, you don't want to share anything. I presume that you already are doing all the things which I am discussing with you. So, the other, I think one of the very important aspect is also that, as you're saying that you have a lot of teacher shortage, I think there could be some ways in which you are strengthening your teachers' professional development also at different levels of time. If you're not, professionally developing them on the regular timings, I think then it really does not give a very positive way of looking at it. So, when we are looking at the learning culture, the very important point is that the changing aspects of a school culture is not a quick process. So don't presume that today you will do it and tomorrow it will start showing you. Most of the actions, may not be able to show you any of the, results for many months or even years. लेकिन वो कहीं ना कहीं integrate कर रहा है आपके learning culture को strengthen करने के लिए. So you need to be very conscious that when you are doing something, don't expect कि ये immediate result आपको दिखा देगा कि मैं अभी 4 दिन में मैं इसका एक कोई result देख लूँ. वो बहुत quick result नहीं होता है. So therefore you have to have a lot of patience. And you still have to be very consistent in your efforts. The most important point is that you have to keep on, evolving the new methods, new mechanisms in which you are looking into, developing the culture and strengthening the culture of learning throughout, your process. So, some of the key takeaways, in my view, which you all can really look into. I'm not going to read the slides since you all can read it yourself. The very important point is that, when we are looking at the learning cultures, it has to have a collaboration of all the stakeholders, number one. And how are you involving each and every stakeholder into your realm is something which you have to devise differently at the different points of time. Every year, and especially I think now the schools are now reopening, you're finding the children, they all are coming with new expectations into the classrooms. They probably have also, been after 2 years of halt into their own systems. I think they will also take time to really get back into the system of learning, back into the classrooms. So at that point of time, I think there's going to be a huge challenge to all of you also. That how do you really, tackle to the learning issues at the different points. So with this, I think I will be concluding this session. If you have any questions, any observations, you're free to ask. मैम, जैसे आपने बात की कि कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो किसी की रिटायरमेंट से या किसी के चले जाने से, जी, तो उसके लिए हम अपने स्कूल्स में पहले ही जो कमेटीज बनाते हैं उसमें रीशफलिंग करते रहते हैं ताकि हर टीचर के पास हर डिपार्टमेंट की या हर काम की नॉलेज एक्सचेंज होती रहे. जी. तो कोई भी रेगुलरली किसी टीम में रहेगा तो फिर वो वैक्यूम क्रिएट करेगा. तो ये हम अल्टरनेट यूज करते हैं अपने स्कूल में. आफ्टर 2 I years think बहुत सारे स्कूल्स में यूज करते हैं, लेकिन जो एक दिक्कत होती है वो ये कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ शॉर्टेज बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा होता है. आप उसमें भी किस तरीके से मोटिवेटेड रखें अपने उन लिमिटेड टीचर्स को. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ प्रिंसिपल. वेरी चैलेंजिंग इन फैक्ट. जी मैम, दैट इज व्हाट स्टाफ शॉर्टेज तो हमारा यूनिफॉर्म चला आ रहा है जब से आरओ स्कूल खुले तब से फेस कर रहे हैं. लेकिन उसमें भी मतलब जैसे हम स्टाफ के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं कि आप ये 2 या 3 लोग ये काम देखेंगे, तो उनके पास 2 या 3 की बजाय 4 या 5 काम आ जाते हैं क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज है. लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर वो जो काम है वो किसी दूसरी टीम को दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रीवियस टीम से पूछें, प्रीवियस टीम से डिस्कस करें, समझें. तो उसमें फिर स्टाफ का आपस में लाइजन भी ठीक रहता है. एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं. जी मैम. आरओई स्कूल टीम वर्क की वजह से चल रहे हैं मैम. आरओई स्कूल फेमस है टीम वर्क के लिए और इसमें स्टूडेंट का एंगेजमेंट भी जरूरी है. हम बड़े बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि आने वाले टाइम में वो पिलर बन रहे हैं स्कूल के. वो बैठे बैठे आ जाते हैं, मैडम हमें टाइम है, हमारे स्कूल आज.
नहीं, that is a पूरी very good कम्युनिटी से practice. जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी पूरा हेल्प करती है कहीं ना कहीं किसी न किसी से, गार्ड भी बहुत कर रहे हैं सभी, क्योंकि एज ए सीईओ सोचना पड़ता है कि हम हैं, हमें सिचुएशन को हैंडल तो करना है, अब अच्छे वे में कर ले तो अच्छा है जी. कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे में स्किल है, टैलेंट सामने आए, हम उस पर फोकस कर सकें। तो 532 स्टूडेंट है तो सब बच्चे इंपॉर्टेंट हैं और सब बच्चे में अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, वही सामने लाने की कोशिश की जा रही है और बच्चे कर भी रहे हैं। और स्कूल का सुरेंद्र राजन मैडम का सपना था कि ये स्कूल अच्छे चले, तो वही थीम लेकर कि आप ही सी हो, आप सब मत सोचना कि डिपार्टमेंट ये करेगा वो करेगा, आप ही को करना है, तो वही कोशिश करते रहते हैं। नहीं, and this is always a learning doesn't stop with all of us. बिल्कुल, जितनी डेफिनेटली। बार आपका नया एक, अब जैसे पिछले 2 सालों से हम लोग जो सब स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स नॉट कि आप, इट्स अक्रॉस द ग्लोब. How do we still continue our learning institutions, the learning culture? बिल्कुल, It's a बिल्कुल। very huge challenge. चाहे हम किसी भी तरीके से करें, अपने नॉर्मल फोन से करें, लैपटॉप से करें या कम्युनिटी के उससे करें, तो these options had always been there. Open learning systems तो शुरू से ही थे हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे. But I think now we are implementing it and accepting it more. That is how I'm looking. So, no, it's really nice interacting with all of you today, I think. But I think I was looking for more interactions. You were looking for a lecture, it seems. Yeah, but I think in the training programs we should be more interactive. क्योंकि जो हम आपसे सीखते हैं, हमारे लिए भी takeaways होते हैं based on your references. So I think one is that I think multi-grade teaching can also be utilized as a part of the training, especially where you're finding that you have a shortage of teachers. Somewhere I think you can look for this model. मैम एक टेक अवे आज के लिए भी है आपके पास कि हम ये मानते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो प्रिंसिपल्स का पैसिव पार्टिसिपेशन बता रहा है कि हम स्टूडेंट्स को कैसे फेस करते होंगे, स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करते होंगे, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल कर पाएंगे। No, but I feel again ये बहुत यूनिक होता है, पता है, स्कूल टू स्कूल हर एक की पर्सनालिटी एक अलग पर्सनालिटी होती है. Some people are very social, some people are very reserved, and there is no need to really come into that bracket. But when you are a leader of a school, your role is very critical. That is how we look at it, and that's why we are and since you all are a part of the teaching fraternity as well, because of course we all are teachers and then we become principals, so we know the nuances, we know the limitations, we know the challenges which are there, and how do you still you try to see that those challenges are actually catered well and you're not carrying forward the same premises. So I think वो हर साल हम खुद भी learn करते हैं, और इसीलिए हम लोग reflective learner की और reflective teachers की बहुत हम बात करते हैं. So we need to be always reflective ourselves, and I think that maintaining a learning diary in itself is also something which can be continued, and many new things can always be integrated. So Ashwini ji, I think thank you so much. I think my time was till 11:15 or 11:30. I don't know. Anyone who would like to talk about any other? Please share your experiences. बहुत सारे तो आपके जो schools हैं वो different districts में हैं, and every district, as I know, have a different kind of literacy levels. आप किस तरीके से उन challenges को integrate करते हैं? आप अपने कुछ good practices मुझे बताएंगे? आप learning culture को enhance करने के लिए और क्या करते हैं? Anyone, I think, can be a part of it. मैम लर्निंग को एनहांस करने के लिए हमारे टीचर्स जो है ना, स्कूल क्लासरूम के विद इन क्लासरूम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं. हाँ. और ग्रुप्स में बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जिस बच्चे को थोड़ा समझ आ गया वो बाकी बच्चों को अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने गुड फेथ में लेकर के समझाए. और ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो वो आपस में स्टूडेंट्स डिस्कस करने के बाद टीचर को रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है. इवन इन ग्रुप्स का हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों की क्लासेस ऑफ हैं, बच्चों को कन्वे करना है, बच्चे ने मोबाइल नहीं देखा या व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा, तब भी हम ग्रुप लीडर की हेल्प लेते हैं कि वो अपने ग्रुप के 4 बच्चे जो उसके पास हैं वो उन चारों से फोन पे बात कर ले कि उनको मैसेज क्लियर हो गया नहीं हो गया, कोई डाउट तो नहीं है. तो लोग काफी तरह से हम उस छोटे छोटे ग्रुप्स को यूज कर रहे हैं.
But I think ये वाले ग्रुप्स तो आपके सारे स्कूल्स में इस्तेमाल हो रहे होंगे in the last 2 years, I'm sure. क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप 22 districts, you are all very well connected. I know you have very good platforms on your WhatsApp groups you have, where you are able to share your experiences with each other, and you're very fast in communicating your skills. I'm very sure about that. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये कि आप एक रोटेशन में अगर करें, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि हम लोग अगर स्टैटिक हो जाते हैं ग्रुप्स के साथ, जो कि आप बोल रहे हैं कि आप उनको कमिटीज मेंबर्स को चेंज भी कर देते हैं, बट टू स्टिल हैव द सेम फेथ इन द न्यू कमिटीज आल्सो, क्योंकि न्यू में थोड़ा सा समय लगता है हमें. यू आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम. सी हम लोगों का क्या है ना, वी सेट अ टारगेट कि हमें इस साल ये करना है. आपको वो टारगेट ही माइंडसेट में रहता है जब हम अपना काम कर रहे हैं. जब आप उस टारगेट को देखेंगे, देन यू विल बी लिमिटेड इनटू योर ओन अप्रोचेस, because then you want that we need deliverables. We don't have time to go into these experiments where we involve the new people. Very, very common. It's nothing unusual I'm talking about. And this happens in most of the places, you know, like हमें लगता है कि हम उन वाले ग्रुप्स के साथ ही काम करें जिनके साथ हमें कॉन्फिडेंस है कि ये लोग डिलीवरेबल्स देंगे, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते. तो कहीं ना कहीं हमें एज अ लीडर ये रिस्क लेना चाहिए कि हम नए लोगों के साथ जुड़े और कुछ नई चीजें भी करें. दैट इज वेयर आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज आल्सो दैट व्हेन वी आर लुकिंग एट द इनोवेशंस व्हिच नीड्स टू बी टेकन प्लेस. इट मे बी अ इनोवेशन विद इन अ कॉन्टेक्स्ट, जो हम, क्योंकि हमारे NIEPA में you all are aware that we give the education officers are getting the innovation awards. The Department of Education Administration does that, and that particular innovation may look trivial to others, लेकिन वो जो एक innovation है वो एक context के लिए है. तो आप उस context को जब तक नहीं देखेंगे आपको वो innovation नहीं लगेगा. जैसे use of technology है, या अगर हम कह रहे हैं reaching the unreached in the rural areas, how do you really keep all these children a part of your learning organization? It may be that they're not coming to the school at times, but still how much connected you are, you know, as a school, as an organization, that and especially in the context of the RTE, where we are saying that each and every child has to be in the school. अब चूंकि उसमें हमने कोई ऐसी punishable offense तो हमने रखा नहीं है that the parents will be penalized or the teachers will be penalized if the child is found on the road. Somewhere I think those kind of things can also be looked into. And once your school is situated at least within the vicinity of the 5 kilometer of area, if you are able to really look into the changes which are there, we will be able to do many of the things at you know, the different levels. So just see that how you are able to integrate those kind of experiences, and these are the experiences that I want you all to share on the board with us, because these are the key takeaways. What I have written is, of course, the most important key takeaways when we are looking at that, you know, how are you looking at the continuous professional development of the teachers, for instance. How do you look into the multi-grade teaching? किस तरीके से आप policies में अगर कोई changes चाहिए तो आप उसको किस तरीके से आप communicate करते हैं, even to your systemic administrators. आप उनके साथ कितना नेगोशिएशन करते हैं कि हमें अगर टीचर्स की कमी है तो हम इसको किस तरीके से करें, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल हैव अ चेन, यू नो, performance which is being assessed at the different levels. How integral you are with the systemic administrators also, that makes the systems work much more smoothly. And then, as I said, that it is always a spiral, you know, which goes away. So whatever is from the school, it goes till the state level policies also. Your contribution is that you are able to communicate to the administrators, the systemic administrators. And these are the issues and challenges which, you know, you are facing, because after all, they all come for a supervision. तो वो जब महीने में आए, 2 महीने में आए, आपको कहीं ना कहीं वो एक अपना एक रिपोर्ट कार्ड एक बना के आप तैयार करते हैं. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वो हम लोग बहुत रेगुलरली उनको फॉलो करें, बजाय इसके कि हम एक साल के अंत में हम देखें कि हमने क्या क्या किया और हमारे क्या क्या गैप्स अभी रह गए. Better we do some
short-term revisits into whatever the goals you have set for yourself. I think somebody wants to say something. Any more interventions? हाँ जी नमस्कार मैम जी, मैं धर्मपाल सिंह बोल रहा हूँ जी, पुनः आपके जी संपर्क में जी आपके बताइए। साथ। हेलो जी बताइए। हाँ जी, तो ये अब लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ये हमारा दायित्व होता है कि हम स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बनाए और उनकी बात को समझे और पेरेंट्स तक भी हम अपनी बात रखें जी। टीचर्स तो हम अब करते ही करते हैं काम को जी। तो इसी प्रकार से मैंने एक अभी 8 मार्च को परीक्षा पर चर्चा जी सोशल मीडिया के माध्यम से जी, वैसे मैंने कहा था ना जी ऑनलाइन के लिए वो करता हूँ जी, पर मैंने चर्चा की कि फरवरी मार्च के महीने का विशेष महत्व होता है क्योंकि विद्यार्थी को वर्ष भर की गई पढ़ाई की परीक्षा देनी होती है जी। उसकी परीक्षा सीधे अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन करती है। इसी के साथ साथ अभिभावक ने घर पर कैसा वातावरण उपलब्ध किया ये बहुत महत्वपूर्ण है जो दोनों के कार्य को सीधा प्रभावित करता है। अतः सभी से अनुरोध है कि सकारात्मक सोच से अपने अपने कार्य को पूरे निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करें। विद्यार्थी अपने माता पिता व अभिभावक के वे स्तंभ होते हैं जिन पर दोनों का भविष्य टिका होता है, अतः इनका मजबूत होना अति अनिवार्य है। तो मैंने सभी से अनुरोध किया कि अपने अथक व सार्थक प्रयासों से विद्यालय की गरिमा बनाए व अपने दायित्व का निर्वहन करें। आशा करता हूं कि आप सभी अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी इनको ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा का सही संचालन करेंगे पूरी तैयारी के साथ। थैंक यू मैम। Thank you, Dharampal ji. I think you have summarized all the points which we were discussing. Very important that we have to be more receptive as the leaders. That is very important. क्योंकि जब तक हम लोग रिसेप्टिव नहीं होंगे तब तक हम कोई बदलाव अगर हम सोच रहे हैं हम ला सकते हैं, उसमें हमें उस जगह तक हमें पहुंचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो लिमिटेशंस तो आपके पास हर बार कोई ना कोई आती ही है। As a leader, you always face challenges, new challenges every time. So जिस प्रकार से हमने जी बच्चों के साथ भी विद्यार्थियों से अभिभावकों से संपर्क किया जी। हाँ। और कोई बताना चाहेगा कुछ? Anybody else from any other school? या फिर आप लोगों को ये तो थोड़ी ट्रेनिंग वैसी लगती है मुझे कि जिसमें कोई बोल नहीं रहा है। I'll be very happy to listen to you, please. Okay, so I think and I look forward that when we are coming to your state, we find that all the schools are having a very conducive learning environment where all the children want to come to the school. This is very important, and that is what you all have to create. Involve them, give them a voice to all the stakeholders, because the stakeholders are the key to developing the learning culture. It cannot be done only by the school. This is very important, and therefore when we are looking at the resource centers, which you all must be developing at the different levels. Those resource centers should also be open or must be placed at a place where each and every stakeholder have access to or are able to contribute. So I think if you're looking at it at the multiple levels, then it will be much more useful. So I think with these words, I'd like to end the session. I hope that you all could find some of the takeaways which may be useful to you, because you yourself are very learned and are working on the ground. So I believe that you all have more experiences, which we can be looking for. I think इससे पहले वाले सेशन में जो केस स्टडी लिखने की बात हो रही थी, तो we really look forward that you will be sharing your resources, and then we will also have a good resource which can be shared with the different states. Also with these works, so thank you so much for being a part of this session, and I look forward to your feedbacks.
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। अश्विनी जी, थैंक यू जी सो जी मच। आपके जी प्रिंसिपल जी बड़े जी शांत हैं आज, अब मुझे नहीं पता क्यों इतने शांत हैं। नहीं आपका प्रिंसिपल यूजुअली आपका जो स्पीच था वो सुनने लायक गया था मैम, इंटरेक्टिव रखा आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इंटरेक्टिव बनाया। और इंटरेक्टिव ही नहीं बल्कि हमारे सभी सम्मानित साथी इसलिए नहीं बोल रहे थे कि आप जो इनको बता रहे थे वो इनके लिए बहुत फ्रूटफुल है था मटेरियल। तो मैं स्कूल लीडरशिप एकेडमी की तरफ से व्यक्तिगत आपके व्यवहार और आपकी कुशलता को सलाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से आपने हमारे सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से एक पेडागोजिकल लीडरशिप को बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच अश्विनी जी फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। या थैंक यू मैम, थैंक यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम आपको। आप सबको भी, आप खूब खेलें अच्छे से रंगों के साथ। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन फैक्ट। थैंक यू। सेम टू यू, थैंक यू जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने डॉक्टर प्रोफेसर मोना सेडवाल जी को सुना, कितने सरलता और अपने विषय को गंभीरता से बताते हुए कि किस तरह हम विद्यालयों को में बदलाव करें, अपने डेडिकेशन से, अपने मोटिवेशन से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से। उन्होंने बहुत बेहतरीन बताया। और जितने विद्वान लोग होते हैं उनमें सहजता ज्यादा होती है, देखने को मिलती है। हम जिन चीजों से जूझते हैं वो एनवायरनमेंट अलग है। और आप नेशनल लेवल पे जी 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 थैंक यू। आई विल लॉग ऑफ क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन शेड्यूल्ड है। जी जी हाँ, वो मैं खुद जी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती हूँ तो आई डोंट लाइक टू एक्सटेंड माय टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू जी। हमारे साथ हाँ जी, ऑल द हमारे बेस्ट टू साथ ऑल ऑफ यू जी, थैंक यू। हमारे साथ नए स्पीकर के रूप में आदरणीय DW रिटायर्ड ज्ञानवती जी जुड़ चुके हैं। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्ते। एक तब तक मैडम जुड़ तो गए हैं, वो अनम्यूट नहीं हो रहा किसी कारण से, मे बी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो। मैं सभी पार्टिसिपेंट से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा, इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि कई बार ऑफिस के काम हो जाते हैं, माइक ऑन रह जाता है आपका, तो उसमें हमारे सभी पार्टिसिपेंट और विशेषकर स्पीकर को बड़ी इरिटेशन होती है। तो मेरी एक विनती है आपसे थोड़ी सी कि जब भी इस तरह की कोई मजबूरी होती है उस समय अपने वीडियो को भी और अपने माइक को भी ऑफ जरूर कर दें, सो दैट दूसरे पार्टिसिपेंट या स्पीकर को ये नहीं लगे भी ट्रेनिंग नहीं होकर के ये इसका दूसरा रूप बन गया है। कई बार मजबूरी होती है, ऑफिस की अपनी मर्यादाएं हैं, ऑफिस के काम भी हैं, ऑफिशियल भी होते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, बच्चों का कोई ऐसा इश्यू बन जाता है, या होता है उच्च अधिकारियों के फोन आ जाते हैं कई बार। तो वो मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझें कि ये ट्रेनिंग नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग चल रही है, आप यूट्यूब पे लाइव है ये ट्रेनिंग। तो इन सब बातों पे, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो सब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें मेरा निवेदन है कि किसी साथी को कोई काम होता है तो निश्चित रूप से आप उस अपनी वीडियो और अपने माइक को ऑफ कर लें, सो दैट ट्रेनिंग में हमें इसको कट पेस्ट करने में, बाद में एडिटिंग करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। और ट्रेनिंग चलती है तो व्यस्तता ज्यादा होती है और आगे के दिन के लिए भी हमें व्यवस्थाएं करनी देखती होंगी। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे करबद्ध विनती, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा नम्र निवेदन स्वीकार करें कि जब कोई काम होता है तो अपने माइक और वीडियो को ऑफ कर लें। और अदरवाइज आप बहुत बेहतर हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके कोऑपरेशन से, सहयोग से ही ये ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है। अभी धर्मपाल जी का जैसे परीक्षा पे चर्चा के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सर ने अपने पेरेंट्स को एक जिम्मेवार नागरिक के नाते समझाया भी, बताया भी कि भाई टीचर के पास तो बच्चा 6 घंटा रहता है, 8 घंटे रहता है, बाकी तो समय आप देते हो। तो परिवार, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल बच्चे को बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है जिस माहौल में बच्चा घर में रहता है। तो हमारा हर साथी जो जुड़ा हुआ है, हर बहन जो जुड़ी हुई है, हर से जो एक डेडिकेशन के साथ आपका जो हमें मोटिवेशन मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय ज्ञानवती जी जो रिटायर्ड DW, मैं करवाऊँ मैडम से फोन करूँ? मैं करता हूँ, कोई बात। मैं तब तक डॉक्टर रजनी जी से निवेदन करता हूँ कि क्योंकि स्पीकर कई बार क्या होता है कि वो घर से ऑन करता है तो नहीं जुड़ पा रही होंगी, कोई बात नहीं, मैं उनसे एक बार फोन करता हूँ। तब तक डॉक्टर रजनी जी आपसे केस स्टडी के बारे में बात करती हैं। डॉक्टर रजनी प्लीज वेलकम।